वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का डिटेल में स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मेट्रिक ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक्स ऑफ सिलेबस इज द मेट्रिक ब्रिज, सो विच इज़ द वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो यहाँ पे मेट्रिक ब्रिज का सर्किट दिया हुआ है। सो metric bridge consists of a wire of uniform cross section and 1 meter in length। ठीक है, तो metric bridge में एक uniform cross section of wire is there and the length of that wire will be a 1 meter। So stretch on a meter scale which is fixed on a wooden table। ठीक है, so that wire will be stretched on a meter scale। ठीक है, so that is the meter scale used। on that there is a scale from 0 to 100 centimeter and which is fixed on the table। So this meter scale will be fixed on the table। So the end of the wire are fixed below 2L shape metallic strip। ठीक है, तो यहाँ पे जो वायर यूज़ होगा, ठीक है, so that wire will be stretched and it will be a fixed below the 2L shape metallic strip and then a single metallic strip separates the 2L shaped strip leaving the two gaps। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिंगल मेटेलिक स्ट्रिप है, ठीक है, सो दैट विल बी अ सेपरेट द 2L शेप स्ट्रिप एंड द गैप देर इज अ 2 गैप इन बिटवीन दैट, सो दैट इज द गैप। देन नेक्स्ट वन इज द, so this is the left gap and the right gap is there। so this left and right gap are usually an unknown resistance X is connected in the left gap and the resistance box is connected in the other gap। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट गैप में जो है वो X रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया है। ठीक है, एंड इन राइट बॉक्स there is a resistance box is connected in this right gap and one terminal of galvanometer is connected to the terminal of C on the center strip। so here the galvanometer is connected between point C and this point D of the meter scale, while the other terminal of galvanometer carries the jockey J। okay, so other terminal that is J is connected to the meter scale with the help of this jockey। so that is the circuit description for this meter gauge। so in short the meter gauge consists of uniform cross section of 1 meter wire which is in straight, so which is straight on stretch on the meter scale which is on the wooden table and the ends of the wire are fixed below the 2L shape metallic strip and it will make the two gap, that is left gap and right gap। so in left gap there will be unknown resistance X will be connected and in right gap there is a resistance box is connected and also the galvanometer is connected between point C and D। so at the D point it is connected through a jockey J। so that is the connection in the meter bridge। so here a temporary contact with the wire AB can be established with the help of jockey। ठीक है, तो जहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, ओके, सो गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ jockey on the this meter scale। so a cell of EMF E along with the key and the rheostat are connected in between point A and B। ठीक है, तो point A and B में हमने यहाँ पे rheostat कनेक्ट किया है and the cell which supplies the power, okay, is connected। a suitable resistance R is select from the resistance box। ठीक है, तो जो हमने राइट गैप में एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बॉक्स में कीज़ होती है। ठीक है, तो जो कीज़ हम उसमें से रिमूव करेंगे, ठीक है, तो वो सब कीज़ रेजिस्टेंसेस के होते हैं, तो उतना रेजिस्टेंस वहाँ पे क्रिएट होगा थ्रू दैट रेजिस्टेंस बॉक्स। ओके, तो वहाँ पे हम एक सुटेबल रेजिस्टेंस R इज सिलेक्ट फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। ओके, then the jockey is brought in contact with AB at the various point on the wire AB and the balance point that is null point D is obtained। ठीक है,
तो इस तरह से हम वहाँ पे सुटेबल रेजिस्टेंस सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स, एंड जो जॉकी जे है, ठीक है, ऑन दिस मीटर स्केल, ओके, वी कैन वेरी along this wire, and a balance point, that is null point, is selected. Okay, the galvanometer shows the no deflection when the jockey is at the balance point. ठीक है, तो जैसे हमने विस्टोन ब्रिज में देखा है कि when current IG, that is the current in the galvanometer, is equal to 0, then we can say that the Wheatstone bridge will be in balance condition. Same principle is work for in meter scale also. Okay, so we can balance the bridge, means the current IG that flows into the galvanometer will be 0. So then at that time we can say that the meter gauge will be in balance condition. So let the respective lengths of the wire between AD, तो पॉइंट ए एंड डी में जो लेंथ है वायर का, ठीक है, सो एंड दैट बिटवीन पॉइंट डी एंड सी बी एल एक्स एंड एल आर, ठीक है, सो दैट लेन विल बी denoted by Lx and Lr. Then using the condition for balancing, we get X divided by R is equal to RAD divided by RDB. Okay, where these RAD and RDB are the resistance of the parts AD and DB of the wire, or the resistance of the wire. Okay, तो यहाँ पे हमने रेशियो लिया है X by R, okay, is equal to RAD, that is the resistance of the part of from A to D, and resistance from D to B, that is the resistance of the wire. If the length of the wire and rho is the specific resistance of that wire, and the area of cross section, that is denoted by A, then we can write RAD, that is point A to D, RAD, and this is the RDB, that is point D to B of the meter scale or the wire. So this RAD is equal to rho LED, that is the length along L to D divided by point A. Then RDB, that is the resistance between this D to B point, is equal to rho L, that is the length along this D to B divided by point A. Okay, so this X by R is equal to RAD divided by RDB. So we have to put the values of this RAD and RDB, which is nothing but the in terms of area of cross section, length. Okay, so rho Lx divided by A, that is the area of cross section, then the value of RDC, okay, sorry, RDB is rho L R divided by A. So X by R is equal to Lx by Lr, because this A get cancel, rho will be cancel. So the final equation will be X by R is equal to Lx by Lr. So therefore X is equal to Lx by Lr. This R will goes into the right hand side. So that equation in terms of unknown resistance X. So by knowing the resistance R, length Lx, length Lr, the value of the unknown resistance can be determined, where this X is nothing but the unknown resistance. ठीक है, तो इस तरह से हमें अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल्स अगर पता है, रेजिस्टेंस, लेंथ Lx, लेंथ Lr, ठीक है, इफ़ यू नो, ठीक है, तो हम आराम से यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस जो X है, जो हमने लेफ्ट गैप में कनेक्ट किया है, ठीक है, तो उसे हम इजीली फाइंड कर सकते विद द हेल्प ऑफ दिस मीटर ब्रिज. So the application of this meter bridge is to find the unknown resistance. So that will be the detailed study of this meter bridge. Then we take the one example. So two resistance of 2 ohm and 3 ohm are connected across the two gaps of the meter bridge as shown in figure. ठीक है, तो यहाँ पे 2 ohm and 3 ohm का जो resistance है, the two resistance are connected between the two gaps of the meter bridge. So calculate the current through the cell when the bridge is in balance condition. So we have to calculate the current
through the bridge when it is in balance condition, and a specific resistance, that is rho, of the material of the meter bridge wire, given that the resistance of the bridge wire is 1.49 ohm and the diameter is 0.12 centimeter. Okay, so that is the data given. So we start with the solution. Okay, when the meter bridge is balanced, the resistance 2 and 3 ohm are in series and the total resistance will be a 5. That is, we have to add the resistance in series. So 2 plus 3 is the 5 ohm. So that is the total resistance of the wire when the bridge is in balance condition. So when bridge is in balance condition, the galvanometer will show the 0. So at that time we can say that the bridge is in balance condition. So let R1 be the resistance of the wire जो कि दिया हुआ है, that is 1.49 ohm, and R2 is the total resistance, that is 2 plus 3, that is 5 ohm. Okay, then we'll see the figure. So in figure, first resistance is 2 ohm which is connected in one gap, that is suppose left gap, and in right gap another resistance 3 ohm is connected in the meter bridge. So this supply voltage is a 2 volt, galvanometer is connected there. So we have to calculate the first RP, that is the parallel resistance, and to calculate the parallel resistance there is a formula. There is a multiplication between two resistors and divided by summation of that resistor. So RP, that is the parallel resistance between this R1 and R2. So this is the R1, this is the R2. So R1 into R2 divided by R1 plus R2. Okay, so the wire resistance is given here. So that is R1 1.49 ohm, and the total resistance, which is the series combination of these two resistance, that is 2 plus 3, which is 5 ohm, that is the R2. So that is 1.49 into 5 divided by 1.49 plus 5. So that will be a total resistance 1.15 ohm, that is the parallel resistance. So the current through the cell is E divided by RP, that is Ohm's law. I is equal to V by R. So instead of V, here EMF of 2 volt is connected battery. So that will be a 2, and this is the R is nothing but the parallel resistance. So हमारे पास दोनों भी वैल्यू है. E is given, that is 2 volt. RP we have already calculated, that is 1.15 ohm. So the current will be a 1.74 ampere. Ampere is the unit of current. Then we have to calculate the specific resistance of the wire, which is denoted by rho, and its formula is R pi R square divided by L. Okay, and the L is 1 मीटर. ठीक है, तो जो लेंथ ऑफ वायर है वो 1 मीटर का है. ठीक है, सो R इज इक्वल टू 0.12 divided by 2 is equal to 0.06 centimeter. Okay, so that is the radius is equal to R is equal to 1.49 ohm, which is given. So rho is equal to R pi R square divided by L, and we have to put the values. R is given, that is resistance of wire is 1.49 ohm, pi is 3.14, in bracket R is 0.06 into 10 raised to minus 2 raised to 2 divided by L is length of wire, which is 1 meter. So the specific resistance of the wire is 1.68 into 10 raised to minus 6 ohm meter. Ohm meter is the unit of this specific resistance of the wire. ठीक है, तो इस तरह से हम मीटर ब्रिज पे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, ओनली द वैल्यू विल गेट चेंज, द प्रोसीजर रिमेन्स द सेम. ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, दैट इज़ द पैरेलल रेजिस्टेंस आरपी. ठीक है, तो उसे कैलकुलेट किया है. उसके लिए हमने वायर का रेजिस्टेंस एंड टोटल रेजिस्टेंस. सो व्हेन ब्रिज इज बैलेंस, ठीक है, when this galvanometer will show the zero reading, we can say that meter gauge is in balance condition. So at that time these two resistance are in series, that is 2 plus 3 5. ठीक है, तो इससे हमने पैरेलल रेजिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया राइट एंड लेफ्ट गैप का. ठीक है, उसके बाद ओम्स लॉ यूज़ करके हमने I इज इक्वल टू V बाय R,
क्योंकि हमारे पास वोल्टेज भी दिया है 2 वोल्ट, दैट इज़ द सप्लाई वोल्टेज, एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें करंट मिल गया 1.74 एम्पियर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके, दैट इज़ रो इज इक्वल टू आर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, तो उससे हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर कैलकुलेट किया है। ठीक है, then application of Wheatstone bridge. So first application of Wheatstone bridge is, the Wheatstone bridge is used for measuring the values of very low resistance precisely. ठीक है, तो जनरली Wheatstone bridge जो यूज़ किया जाता है वो लो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो लो रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली Wheatstone bridge कैलकुलेट कर सकता है। सो दैट इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस Wheatstone bridge. Second application will be a, we can also measure the quantities such as the galvanometer resistance, capacitance, inductance and impedance using the Wheatstone bridge. ठीक है, तो second application जो है वो we can easily calculate the quantities like galvanometer resistance. ठीक है, that is IR is the internal resistance because every meter has its own रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम इस तरह से गैल्वेनोमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपेसिटेंस का, इंडक्टेंस, देन इम्पीडेंस दैट इज़ डिनोटेड बाय जेड। ठीक है, तो इसके लिए भी हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो ये दो मेन एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस एंड सेकंड वन to calculate the internal resistance of galvanometer, capacitance, inductance and impedance by using the Wheatstone bridge. So that will end the study of this Wheatstone bridge. Then we study the Kelvin method, which is the one of the method to measure the resistance of galvanometer by using the meter bridge. ठीक है, तो मीटर ब्रिज का ही एक मेथड है केल्विन मेथड, जिससे हम गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर दिया है जिसमें केल्विन मेथड से गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो यहाँ पे मेज़र किया गया है। तो उसके लिए हम पहले वर्किंग देखेंगे। सो द गैल्वेनोमीटर हुज रेजिस्टेंस जी इज़ डिटरमाइंड विच इज़ कनेक्टेड इन वन गैप एंड अननोन रेजिस्टेंस आर इज़ कनेक्टेड इन अदर गैप। ठीक है, तो जैसे हमने मीटर गैप में या मीटर गेज में देखा कि वहाँ पे मीटर ब्रिज में दो रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं। ठीक है, लेफ्ट गैप एंड राइट गैप में। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट गैप में गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, एंड राइट गैप में नोन रेजिस्टेंस दैट इज़ वेरिएबल रेजिस्टेंस आर इज गेट कनेक्टेड। ठीक है, then we start with the working. So first point is, in working a suitable resistance is taken in the resistance box. ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हमने राइट गैप में, तो एक सुटेबल रेजिस्टेंस यहाँ पे हम चूज़ करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स से, एंड द करंट इज सेंड अराउंड द सर्किट बाय क्लोजिंग द की। ठीक है, तो की के इज क्लोज आफ्टर दैट। ठीक है, देन द सुटेबल करंट विल बी फ्लो थ्रू दिस सर्किट, ओके, from this power supply E. So without touching the jockey at any point of the wire, the deflection in the galvanometer is observed. ठीक है, तो उसके बाद जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में, ठीक है, वो ऑब्जर्व करेंगे हम। ठीक है, सो दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। सो इन फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट वी हैव टू choose the suitable resistance from this resistance box. Then current will be flow through the circuit by closing this key K. So after that, without touching the this jockey, okay, we have to observe the deflection in the galvanometer. Then second step will be the rheostat is adjusted to get a suitable deflection around 2/3 of the range. ठीक है, तो उसके बाद हम ये जो रियोस्टेट है, ठीक है, तो रियोस्टेट को हम एडजस्ट करेंगे and to get the suitable deflection, that is 2/3 of the total range. Then third step will be the, now the jockey is tapped at a different points of the wire and the point of contact D for which the galvanometer shows the no change in the deflection is found. Then after that, ये जो यहाँ पे jockey है, ठीक है, at point D it is tapped at the different points on this wire, okay.
so that the point D is obtained, which is the null point for the meter bridge. When at that point the current through the galvanometer will be 0. So we, after that we can say that the this मीटर गेज इज बिन इन बैलेंस कंडीशन, ठीक है। तो वो पॉइंट हम फाइंड करेंगे बाय टैपिंग द जॉक की at the different points on the wire, okay, and that point D will be obtained. So the deflection in the galvanometer will be a 0. Then fourth point, as the galvanometer shows the same deflection with or without the contact, then between point B and D, so this point must be a equipotential point, ठीक है। Then fifth step, the length of the bridge wire between point D and the left end of the wire is measure, okay। तो वहाँ पे हम लेंथ मेजर करेंगे जो वायर हमने कनेक्ट किया है इन द ब्रिज, ठीक है, बिटवीन पॉइंट डी एंड द लेफ्ट एंड, ओके, दैट इज द एल जी, दैट इज बी द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ वायर अपोजिट टू द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो एल जी इज द लेंथ ऑफ सेगमेंट वायर इन अपोजिट टू द गैल्वेनोमीटर एंड एल आर बी द लेंथ ऑफ सेगमेंट अपोजिट टू द रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एल आर जो है वो अपोजिट है लेंथ ऑफ वायर that is the to the resistance box, and Lg is the length of wire which is opposite to the galvanometer, okay, like that. So that is the Lr and Lg is there, okay. So that is the length of wires. So after that we can calculate the unknown resistance. So let RAD and RDC is the resistance of the two parts of the wire, that is point AD and in between DC. So RAD is the resistance between A to D point and RDC is the resistance between D to C point. Since the bridge is in balance, ठीक है, तो जब bridge balance होगा, so RAD is the resistance between A to D point and RDC is the resistance between D to C point. So by using the balance condition we can write that is G divided by R is equal to RAD डिवाइडेड बाय RDC, ठीक है। तो ये मीटर ब्रिज का बैलेंस कंडीशन का फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज़ किया है, ठीक है। सो RAD डिवाइडेड बाय RDC इज इक्वल टू LG डिवाइडेड बाय LR, ठीक है। तो LG एंड LR आर द लेंथ ऑफ द सेगमेंट और द वायर, ओके। सो इज इक्वल टू G by R is equal to LG by LR, okay. So after that this G by R is equal to LG and this LR is 100 minus LG because LG plus LR is equal to 100 centimeter, ठीक है। So G is equal to LG divided by 100 minus LG into R. So using this formula the unknown resistance of the galvanometer can be calculated by using the Kelvin method, okay. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पोटेंशियोमीटर का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।